Hello guys, good morning. How are you all? कैसा चल रहा है बाबू చెప్పండి. Good morning. How is going on? Good morning, good morning, good morning. Pranam, pranam. How are you all? कैसा हो रहा है बाबू? Just a minute. Good morning guys. Good morning, good morning. After the AMA session, things are going on track. अच्छा हो गया. Very good. के गारो. कुछ डाउट होगा? क्या हो गया रे बाबू? संयम जी, आप कभी कभी क्लास में आ रहे, कभी कभी क्लास में नहीं आ रहे. ऐसा इरेगुलर होगा तो ऐसा प्रॉब्लम भी होता है. हर एक दिन क्लास में आना पड़ेगा. Good morning, Himanshu. 3-hour unit hydrographs at a 6-hour intervals are provided. First you have to do 6-hour unit hydrograph given ना. 6-hour rainfall occurred. ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा. ये तो आसान क्वेश्चन. देखो एक बार. Just you take time data as 0369 like that. Time data will be there ना 0369. Then you write all the ordinates. Time में ऐसा लेना पड़ेगा 0639 like that. You take all the ordinates. Discharge values ले लो. Then they said flood peak is 120 meter cube per second. Flood peak is 20 meter cube per second. QUH peak is given values में highest क्या होता है 32 ना. Q32 meter cube per second. QDRH because base flow, how much given base flow? QDRH बोलो 120 minus 8. QDRH by QUH. हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ UH तो लेना पड़ेगा ना. ERF मिल गया 3.5. Then you have loss rate 5 mm per hour. 3.5 plus 6 into 0.5. 6.5 सेंटीमीटर हो गया. 6.5 सेंटीमीटर हो गया. स्ट्रीम फ्लो एट 18th आवर पूछ रहे. 18th आवर स्ट्रीम फ्लो पूछ रहा है. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Because 3 hourly ordinates they said. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 2. QUH is 2. QFH. 2 into 3.5 plus 8. 15. हो गया. तो थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का. पहले क्या करना, क्या करना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस होता है. प्रणाम प्रणाम हर्ष गारू. चलो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. फ्लड रूटिंग. फ्लड रूटिंग. सो वी हैव प्लॉटेड यूनिट हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. कहां प्लॉट किया, कहां प्लॉट किया? एट द स्ट्रीम इन ए कैचमेंट ना. सो दिस इज ए कैचमेंट. ये कैचमेंट का आउटलाइन. सुधांकुल खड़ा है इधर. इधर सुधांकुल खड़ा है. ही इज फाइंडिंग द फ्लड वैल्यूज. हाँ, चैप्टर नंबर 10. ओके, चैप्टर 10. सुधांकुल इधर तो खड़ा है. ही इज फाइंडिंग द फ्लड वैल्यूज. फ्रॉम दिस वी गेट a flood hydrograph. Now this outlet of stream is going somewhere. Outlet of stream is going somewhere because that is a flood, huge heavy rainfall, damage, water is taken out, flood is diverted. Flood is diverted. और दूसरा जगह में रिलीज करेगा ना. It is going to release in another location. It is going to release in another location or not? So दूसरा जगह में होता है, कोई रिजर्वायर में रिलीज करेगा, कोई रिजर्वायर या कैनाल या पॉन्ड और लेक, कहां भी रिलीज करेगा अंदर. कोई जगह पे सुधांकुल को 3 लेग है. अरे रियली रियली ऐसा होता है. So now this is said to be inflow for the reservoir. No? This is said to be inflow for the reservoir or canal. Then it is discharging over here. It is discharging over here. It will be considered to be outflow. It will be considered to be outflow. And that outflow hydrograph we need. Inflow hydrograph we have plotted from Sudhagaru data say inflow hydrograph already. Using the ordinates of inflow hydrograph, getting the ordinates of both are not same because inflow happened today at 9 AM. I took SSC JE class 2 घंटा सुबह. Never they told voice gate ऐसा हो रहा है.
ये सुधांकुल का वैल्यू से हम इनफ्लो हाइड्रोग्राफ डेटा ले लिया. यूजिंग दिस इनफ्लो हाइड्रोग्राफ डेटा वी आर गोइंग टू पुट आउट हाइड्रोग्राफ. सुबह रेनफॉल शुरू हो गया इधर 9 AM पे. आफ्टर 2 days 3 days or 4 days it can reach this much long distance. The distance may be 10 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कुछ भी होता है डिस्टेंस. इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण से so it can take a long time to travel. That long time of travel consider करके हम आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ ड्रा कर लिया. So that getting outflow hydrograph data, you inflow flood routing. Good morning Deepika. 1 minute, I will change the network आपके लिए. अब बोलो बेटा. हाँ चलो. So ये बात एक स्टोरी सुनो. कर्नाटका में इतना बड़ा लंबा रेनफॉल हो गया, फ्लड हो गया. निपुण गारू इज द स्टेट assistant executive engineer for a dam, Almaty Dam. So huge rainfall occurred in the Almaty Dam. So Nipun is opening the gates. So that flood is traveling to Maharashtra state. बहुत खुश हो जाएगा महाराष्ट्र वाला बहुत खुश हो जाएगा. So कर्नाटका से बारिश चल रहा है, पानी महाराष्ट्र तक. So इनफ्लो हाइड्रोग्राफ कहाँ मिल गया? कर्नाटका में मिल गया इनफ्लो हाइड्रोग्राफ. Because flood happened in the कर्नाटका, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ कर्नाटका में हो गया. ये क्यों गेट्स ओपन किया? क्योंकि गेट्स नहीं ओपन होगा तो डैम बर्बाद हो जाएगा, कर्नाटका पूरा डूब जाएगा. इनका वजह से कर्नाटका वाला ओपन द गेट्स. ठीक है. ये तो महाराष्ट्र को दे रहा है. इतना फ्लड आ गया, ये महाराष्ट्र को भी डूब जाएगा. डैमेज इज गोइंग टू हैपन इन महाराष्ट्र व्हेन दे ओपन द गेट्स. सुनो, विल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिलैक्स इट? अरे हम इधर से पानी दिएगा, आपका स्टेट में पूरा का पूरा डूब जाएगा, फ्लड आएगा, पूरा डैमेज होता है, ज्यादा पानी आ रहा है. सो हाउ कैन वी नो दैट वेदर महाराष्ट्र डूब जाएगा या नहीं? ये पता करेगा यूजिंग आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ. समझ आ रहे हैं? बेस्ड ऑन द फ्लड अकर्ड इन कर्नाटका, बेस्ड ऑन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, यू आर प्लॉटिंग द वैल्यूज फॉर आफ्टर फ्लड रीचेस Maharashtra, what will be the situation? What will be the hydrograph? So that will be plotted. Based on the values, we can say whether it is safe, damaging, whether we have to release only to Maharashtra or we have to release the water to 2 states, Maharashtra and Tamil Nadu. If they feel, understand, if they feel only water is traveling towards Maharashtra, damage is happening. So we can give it to Maharashtra as well as Karnataka. So Maharashtra as well as Tamil Nadu, Karnataka to Maharashtra, Tamil Nadu. 2 states को split करना पड़ेगा पानी. So that no damage in Maharashtra, no damage in Tamil Nadu. So that when it is happening, अरे फ्लड होने का टाइम पे रिलीज करने का पहले, बिफोर यू रिलीज द वाटर इनटू द अदर स्टेट, अदर कैचमेंट, सो दैट विल बी नोन. हम इनफ्लो हाइड्रोग्राफ डेटा लेके आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ प्लॉट करने के बाद, इफ यू प्लॉट आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ थ्योरेटिकली, घर में बैठ के थ्योरेटिकली वी सिट इन द रूम एंड वी कैन प्लॉट इट यूजिंग इनफ्लो हाइड्रोग्राफ. सो दैट वैल्यूज ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ अपने विल बी सेफ, यू कैन रिलीज. नहीं होगा रिलीज मत करना पड़ेगा. अरे उनका जगह में एक कैनाल, इरिगेशन कैनाल है, हमसे ले लिया. हाँ, अपर बरीडोब कैनाल ऑफ पंजाब, पता है आप इरिगेशन में बहुत सारा बात करेंगे इनके बारे में. चलो, so that construction of, देखो, this is a flood control dam, reservoir storing the water, you are opening the gates, पानी बाहर निकल जाएगा. this is inflow. so inflow यहां से आ रहा है, हमको पता है inflow कहां से आएगा, क्या आएगा, हमको पता होता है. inflow known, flood is happened here, inflow तो पता है. डैम तक आ गया, पानी रोक गया रिजर्वायर में. so now you open the dam gates, आउटफ्लो चले गए, यस एचएफएल तक आ गया, आउटफ्लो चले गए. सो यू आर डाइवर्टिंग. डाइवर्शन का टाइम पे आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ बनना पड़ेगा. क्योंकि ये आउटफ्लो डाउनस्ट्रीम को थोड़ा, दिस इज अपस्ट्रीम सेव करने के लिए हम पानी डाइवर्ट कर लिया डाउनस्ट्रीम में. डाउनस्ट्रीम तो डैमेज मत करना पड़ेगा ना. वी डोंट वांट टू डैमेज द डाउनस्ट्रीम बाय रिलीजिंग वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम. यस और नो? पानी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम रिलीज कर लिया, बट वी कांट अलाउ डाउनस्ट्रीम टू डैमेज टू प्रोटेक्ट द अपस्ट्रीम. वी कांट अलाउ इट. देखो एक पिक्चर आई विल ड्रा. So this is the dam. So here spillway gates are there. Gates of spillway. This is upstream. This is downstream. Water came into reservoir here. So कहाँ से कुछ flood which is happening at some location. In upstream. Inflow हाइड्रोग्राफ हमारे पास है. inflow flood हाइड्रोग्राफ. सिर्फ आपको समझ होने के लिए बेटा, ड्रा करना जरूरी नहीं, just to understand for you. Now you are allowing this water because this is HFL, डूब गया पूरा का पूरा हाई फ्लड लेवल तक आ गया पानी. सो वाटर इज पासिंग टू इट, रिलीजिंग. रिलीज होने के बाद इधर क्या डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है, कौन सा डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है, इनको निकलना पड़ेगा इधर आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ. दिस फाइंडिंग आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ एट डाउनस्ट्रीम यूजिंग इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एट अपस्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड फ्लड रूटिंग. समझ आ गया? फाइंडिंग आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ वैल्यूज कब? बिफोर ओपनिंग द गेट्स. गेट ओपन करने के पहले भी फाइंडिंग आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ वैल्यूज बिफोर ओपनिंग द गेट्स यूजिंग इनफ्लो हाइड्रोग्राफ डेटा, दैट इज कॉल्ड फ्लड रूटिंग. समझ आ गया? यस करेक्ट सुधा गारू, ट्रू.
द साइंटिफिक मेथड ऑफ द साइंटिफिक मेथड, क्यों साइंटिफिक बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच, इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच, इट्स ए थियरिटिकल प्रोसेस साइंटिस्ट have derived. Completed, Kunal Garu. The scientific method of determining outflow flood hydrograph ordinates, that is downstream flood hydrograph using the flood data available at one or more upstream stations, that is from inflow flood hydrograph is called as flood routing. हो गया, completed. So you understand the statement, everyone understand the definition. What is the meaning of flood routing? समझ आ गया? पहले outflow data निकलना पड़ेगा using inflow data, बस outflow hydrograph data निकलना पड़ेगा using inflow hydrograph data. So ये डायग्राम ड्रा किया ना, you drawn this diagram, everyone? हाँ, very good. Now गौरव गारू नहीं किया क्या? So okay, good, no problem. So here we write basic flood routing equation. ये क्या बोलता है बेसिक फ्लड रूटिंग इक्वेशन में? व्हाट हैपेंड ऋषिकेश? लेट आ गया, इनफ्लो आई माइनस आउटफ्लो वो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आई माइनस वो, व्हाट इट शुड बी? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज चेंज इन स्टोरेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अरे एक स्ट्रक्चर का अंदर पानी आ रहा है, बाहर निकल रहा है, रिमाइनिंग तो स्टोरेज हो जाएगा ना बेटा. स्टोरेज नॉट अ स्लोप, स्टोरेज बेटा, स्लोप नहीं, स्टोरेज. स्ट्रक्चर का अंदर पानी आ रहा है, देखो स्ट्रक्चर का अंदर पानी आ रहा है, इनफ्लो यहां से आके डूब गया, स्टोर हो गया, बाहर चल रहा है. सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो 10, आउटफ्लो 4, 6 क्या हो गया? 6 स्ट्रक्चर का अंदर स्टोर हो जाएगा. एंड दैट स्टोरेज इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो वी कैन से इट एज ds by dt, द परफेक्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ delta s by delta t. If you integrate it, differentiate it, you can get perfect value with the time limit ds by dt. Inflow minus outflow is equal to ds by dt. I minus O. So instead of O, we are writing here Q. Outflow discharge Q. Inflow discharge I. I minus Q is equal to ds by dt. I minus Q is equal to ds by dt. So now we can classify flood routing methods. We can classify flood routing methods into two. Hydrologic flood routing. Hydraulic flood routing methods we can classify into two: hydrologic flood routing and hydraulic flood routing. Storage capacity to construct, that is another derivation, Imran. We never talk about storage capacity. ये कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट कैसा रहेगा? आप आउटलेट ओपन करने के बाद पानी चलेगा, आउटलेट में वाल्व क्लोज करने के बाद स्टोरेज बढ़ जाएगा. दैट डिपेंड्स अपॉन आउटलेट वाल्व, हाउ मच टाइम यू आर ओपनिंग, हाउ मच टाइम यू आर क्लोजिंग, बिकॉज़ आउटलेट विल बी अंडर कंट्रोल ना. आपको पानी चाहिए वाल्व ओपन करो, पानी ना चाहिए वाल्व क्लोज करो. सो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर तो कांस्टेंट है, सो आप ऐसा ले लिया, 5 लीटर टैंक यू हैव टेकन, फिल द वाटर फुल 5 लीटर, टैंक इको टैप है. इफ यू ओपन द टैप, वाटर इज फॉलिंग डाउन, स्टोरेज कम हो जाएगा. इफ यू क्लोज द टैप, स्टोरेज विल बी कांस्टेंट. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाल्व्स रहेगा ना, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज पास्ड आउट, ये तो डिपेंड करेगा ना. So now hydrologic flood routing and hydraulic flood routing, two types of flood routing method. So when you take hydraulic flood routing, complex, highly advanced, most accurate. ये IIT बॉम्बे वाला इनका बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है, हाइड्रोलिक फ्लड रूटिंग के बारे में.
complex, highly advanced, and most accurate. Needs high-speed digital computer. It is not simply by manual. It needs a high-speed digital computer to solve it. So it depends on first continuity equation. आपको बताया ना continuity equation क्या है? A1 V1 is equal to A2 V2. A1 V1 is equal to A2 V2. Discharge of inflow is equal to discharge of outflow. Then send Vinance equation. Send Vinance equation. Send Vinance equation क्या होता है? Unsteady, gradually varied flow equation. Unsteady, gradually varied flow equation. So most irregular flow. Flow is most irregular. इनका equation होता है unsteady, gradually varied flow equation. Flow is unsteady, non-uniform, varying gradually. Equation. So ये गेट एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन में मत चलो. In the hydraulic flood routing, what they will ask? Only one thing. Which of the following equations used for hydraulic flood routing? The only question, only remember regarding hydraulic flood routing. Which of the following equation utilized for hydraulic flood routing? One is continuity equation. Second one, Saint-Vinance equation. Which of the following equations used for hydraulic flood routing? Then, when it comes for hydrologic flood routing, simple technique. Simple technique. Based on inflow and outflow. Based on I and Q. Simple technique based on I and Q. Good morning, Piyush. Manual flood hydrograph. Hydrograph computer नहीं, human being. Human being is going to plot. अब बोलो most accurate मिलेगा? Most accurate मिलेगा? Approximate तो मिलता है हमको. Approximate values. Approximate values. Depends only on, only बोल रहे only. Depends only on continuity equation. It does not depend on unsteady gradually varied flow. It considers the flow as steady uniform flow. अरे सुधांकुल क्यों माइक लेके आ गया इधर? यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो जैसा कंसीडर करके आ गया. यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो जैसा कंसीडर करके सॉल्व किया. सो ओनली डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओनली डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन. चलो so it decides that basic equation, it stick on to basic equation only. Hydrologic flood routing stick on to basic equation only. I minus Q is equal to ds by dt. It does not depend on any other new equation. Just it stick on hydrologic flood routing stick on to I minus Q is equal to ds by dt because it depends only on continuity. And hydraulic flood routing depends on this and considers flow is varying. Considers flow is varying. So many calculations required for it. That is why the change in storage ds by dt. That is why ds by dt. सुधागारू every time discharge vary होता है, इनका वजह से ds by dt ले रहा है, इनका वजह से. Hydraulic flood routing during internship, very good, nice. So now hydrologic flood routing होता है two types. Again hydrologic flood routing we classify into two types. Hydrologic reservoir flood routing. Hydrologic reservoir flood routing. Second one, hydrologic channel flood routing. Hydrologic channel flood routing. Two types. Hydrologic reservoir flood routing, hydrologic channel flood routing. एक बात बोलना पड़ेगा इधर. सुधांकुल पाकिस्तान हैदराबाद से इंडिया हैदराबाद आने के लिए कोशिश कर रहे हैं. He want to come from Pakistan Hyderabad to India Hyderabad. So ये क्या करेगा? पाकिस्तान हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गया. पहले दिल्ली, ये फ्लाइट लाने के लिए दिल्ली से बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, इनका पास पैसा नहीं. So what he can do, he take one flight हैदराबाद to दिल्ली. दिल्ली में 1-2 दिन काम करेगा, आटा मिलेगा, ये आटा बेच के पैसा आएगा. Then he take train come to Hyderabad. So he can stay in Delhi for 2-3 days. हाँ. So water also doing that. हमारा सोर्स है ना इनफ्लो कहां से आ गया? वहां से कुछ देर ट्रैवल किया, रिजर्वायर में डूब गया, रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा. भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा. बाद में आउटफ्लो आएगा. इट कैन कम टू डाउनस्ट्रीम एंड पॉइंट आफ्टर लॉन्ग टाइम. स्टोरेज मिलेगा ना उधर. एक सुधांकुल काम कर रहे दिल्ली में 2-3 दिन पैसा जमा करने के लिए, सेम लाइक दैट. सो स्टोरेज क्या करेगा? फ्लड का इफेक्ट इंटेंसिटी कम करेगा ना. इफ फ्लो फ्लड वेव इज ट्रैवलिंग फटाफट इन कैनाल एंड कमिंग इनटू रिजर्वायर, फ्लड वेव का वेलोसिटी कम करता है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लड, डैमेज ऑफ फ्लड कम करता है रिजर्वायर. आफ्टर दैट इट इज डाइवर्टेड ना. सो इट इज सेफ रहेगा. इट इज सेफ. बट ऐसा नहीं, सुधांकुल के पास बहुत ज्यादा पैसा मिल गया बेटिंग में, ड्रीम 11 पे बहुत ज्यादा पैसा मिल गया सुधांकुल को. सो नाउ ही इज बुकिंग ए डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद टू इंडिया हैदराबाद. सो 3 घंटा में इधर पहुंच गया. इतना पैसा आ गया ना ड्रीम 11 पे. सो 3 घंटा में फटाफट पहुंच गया. इंटेंसिटी ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है, फटाफट आएगा इधर. सेम क्या हो रहा है? रिजर्वायर नहीं है दोनों के बीच में. इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज देयर. इन बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो देयर इज नो रिजर्वायर. डायरेक्टली फ्लड कहां से आ गया, वहां से डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम को आउटफ्लो दिया. विद द सेम फ्लड, विद द सेम वेव, विद द सेम इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी. डैमेज ज्यादा होता है ना. ये रिजर्वायर के अंदर डूब गया तो वेलोसिटी कम कर लिया, डैमेज कम कर लिया, स्टोरेज हो जाएगा. बट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम सोर्स टू डाउनस्ट्रीम. सो सेम इफेक्ट, सेम इंटेंसिटी रहेगा सोर्स टू डाउनस्ट्रीम. ऐसा होने के बाद हाँ होता है ना बेटा, बोलो. क्लियर गाइस? क्लियर? आपको पिक्चर तो क्लियर हो गया ना? आई विल ड्रा वन मोर पिक्चर फॉर मोर क्लैरिटी.
यस, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा इन हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटिंग, इंटेंसिटी कम हो जाएगा बिकॉज इट विल बिकम स्टोरेज इन हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर रूटिंग. So in between upstream and downstream there is a reservoir. In between upstream and downstream there is a reservoir. Upstream तो यहाँ है, upstream is located here. Water is coming from upstream, given to reservoir. Upstream से पानी अंदर आ गया रिजर्वायर के अंदर, ये पानी स्टोर हो गया. स्टोरेज होने के बाद में बहुत टाइम के बाद डिलीवरी करेगा डाउनस्ट्रीम पे, डिलीवरी करेगा बहुत ज्यादा दिन के बाद डाउनस्ट्रीम. सो स्टोरेज हैपनिंग, स्टोरेज स्ट्रक्चर इज देयर इन बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. स्टोरेज इज अलाउइंग, समझ आ गया इमरान? स्टोरेज इज अलाउइंग. यस, कोई दिक्कत नहीं संयम, ये तो पिक्चर इंक्लाइंड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, समझ होना चाहिए बस. कोई एग्जाम में आपको पिक्चर के बारे में नहीं पूछेगा, जस्ट यू अंडरस्टैंड इट इज कमिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम ट्रैवलिंग टू डाउनस्ट्रीम आफ्टर स्टोरेज कंप्लीटेड. अब हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग क्या होता है? अपस्ट्रीम से पानी चल रहा है कंटिन्यूअसली डाउनस्ट्रीम तक, देयर इज नो स्टॉपिंग पॉइंट. फ्लड वेव डिस्चार्ज हो जाएगा, फ्लड वेव ऐसा इतना ज्यादा इंटेंसिटी से चल जाएगा, डूब जाएगा. देयर इज नो कंट्रोल्ड फ्लो हियर, डायरेक्ट, नो स्टोरेज हियर, नो स्टोरेज, नो रिजर्वायर इन बिटवीन. दोनों का बीच में कोई रिजर्वायर नहीं होता है, दोनों का बीच में हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर फ्लड रूटिंग जैसा दोनों का बीच में कोई रिजर्वायर नहीं होता है. And your hydrologic flood routing, we can say, depends on modified pulse method, Goodrich equation. Hydrologic reservoir flood routing depends on modified pulse method and Goodrich equation. And the hydrologic channel routing depends on, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बार आएगा, मस्किंगम मेथड. स्टार मार्क लगा दो इनको. We have numerical question, theory question. This is only required entire flood routing में गेट एग्जाम 2 मार्क क्वेश्चन आएगा मस्किंगम मेथड से, और कहां से भी नहीं आएगा, गेट एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट मस्किंगम मेथड होता है. हो गया कंप्लीट राइटिंग? हेलो, आता बोल रहे. So now put the heading. Hydrologic table खत्म बेटा, टेबल खत्म. Reservoir flood routing. Hydrologic reservoir flood routing. No, that Goodrich equation is different. This one is different. Gaurav, both values different. Both equations different. Hydrologic reservoir flood routing. The flood routing approach. In which the flood wave travel between upstream to downstream, that is between source to downstream channel or river, with the storage capacity in between, storage capacity means reservoir तो आ जाएगा in between, storage capacity है reservoir in between is called hydrologic reservoir flood routing. Completed. So the most important aspect we are going to consider over here, we plot a graph now. So we are taking first inflow hydrograph values in meter cube per second, flood hydrograph. Okay, inflow flood hydrograph, हमको पता है flood hydrograph कैसा होता है. So this is our flood hydrograph ना, regular inflow flood hydrograph ऐसा रहेगा ना हमारा regular inflow flood hydrograph ऐसा भी रहेगा ना. अब तो हम बात कर रहे हैं outflow hydrograph. This is inflow hydrograph, समझ लो पहले. This is inflow flood hydrograph. ये तो पता है ना, everyone knows this. Inflow flood hydrograph क्या होता है पता है everyone? Now we are going to plot about outflow flood hydrograph Q on the same graph, interpolating overlapping Q, outflow flood hydrograph on the same graph. So थोड़ा देर में होता है, ऐसा चलेगा ना outflow, थोड़ा देर के बाद होता है. देखो एक बार, इधर ये शुरू किया, थोड़ा देर के बाद होता है. So this is outflow flood hydrograph, outflow FH. So सुनो ध्यान से, ये दोनों का बीच में होने वाला एरिया ओवरलैपिंग ना, बोथ कंबाइन एरिया, ये क्या होता है?
स्टोरेज, स्टोरेज ना, एंड दिस इज इनफ्लो। एक बार देखो ऊपर वाला ये कंप्लीटली क्या होता है, ये ऊपर वाला इनफ्लो, बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये क्या होता है, आउटफ्लो। दोनों का बीच में, दोनों का बीच में। सो दिस डिफरेंस इन हाइट्स मिल रहा है ना, इनफ्लो का पीक, आउटफ्लो का पीक, डिफरेंस इन हाइट्स, इनको बोल रहा है हम एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन, इनफ्लो का पीक एंड आउटफ्लो का पीक, आई पीक माइनस क्यू पीक, एटेन्यूएशन बोल रहे हैं, आई पीक माइनस क्यू पीक, एटेन्यूएशन। दिस इज द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पीक ना, इनफ्लो पीक अकर एट दिस टाइम, आउटफ्लो पीक अकर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखो एक बार टाइम डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो पीक एंड आउटफ्लो पीक, टाइम डिफरेंस, ये क्या बोल रहे हैं, टी लैग, लैग टाइम, लैग टाइम। समझ आ गया पिक्चर, पिक्चर क्लियर, एटेन्यूएशन, टाइम लैग, इनफ्लो आउटफ्लो स्टोरेज, एटेन्यूएशन, टाइम लैग, इनफ्लो आउटफ्लो स्टोरेज, पूरा पता हो गया बेटा, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। सो व्हाट इज पिक्चर गिविंग अस इंफॉर्मेशन, ये पिक्चर हमको क्या बोल रहा है, रिजर्वायर रूटिंग में क्या होता है, देखो एक बार। नो नो दैट इज डिफरेंट, ये हाइड्रोग्राफ टॉपिक का लैग टाइम है, ये तो फ्लड रूटिंग का लैग टाइम हो रहा है ना निपुण। हाँ ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव संयम, नो डाउट रिगार्डिंग एटेन्यूएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। निपुण गारू, दैट कांसेप्ट इज वी आर स्टडीड इन फ्लड हाइड्रोग्राफ, दैट इज डिफरेंट कांसेप्ट। फ्लड रूटिंग का लैग टाइम बात कर रहे हैं, फ्लड रूटिंग का लैग टाइम बात कर रहे हैं। चलो you need this one, डन। चलो ये बात सुनो, रिजर्वायर स्टोरेज में क्या हो रहा है, रिजर्वायर रूटिंग टेक्निक में इनफ्लो अंदर आ रहा है, इनफ्लो अंदर आ रहा है, स्टोर हो रहा है, आउटफ्लो बाहर चल रहा है। नो नो आई विल राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई विल राइट, सुनो ध्यान से पहले। सो ऑल हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग, हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर फ्लड रूटिंग, हाइड्रोलॉजिक चैनल फ्लड रूटिंग, बोथ डिपेंड्स ऑन दिस ओनली ना, बेसिक इक्वेशन, बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन I - Q = ds/dt, दोनों में ये चलेगा ना, रिजर्वायर फ्लड रूटिंग में, चैनल फ्लड रूटिंग में, दोनों में चलेगा ना। बट रिजर्वायर फ्लड रूटिंग में स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, देखो स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली। व्हाई, अरे आई विल टेल ना व्हाट आई कैन राइट, आई विल राइट, क्या पहले ऑलरेडी पूछ लिया एक स्टूडेंट और बार-बार पूछ रहा है, आई विल टेल यू व्हाट यू राइट, पहले सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, पहले क्या बोल रहा है, देखो देखो पिक्चर, पिक्चर देखो पहले क्या बोल रहे हैं, सुनो। हम इनफ्लो दे रहा है, इनफ्लो कुछ भी होता है, आउटफ्लो तो कंटीन्यूअसली चलेगा इफ यू क्लोज एंड ओपन द वाल्व, बिकॉज़ ये सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व में डिपेंड करेगा ना आउटफ्लो, वेदर यू क्लोज द वाल्व वेदर यू ओपन द वाल्व, इनमें डिपेंड करेगा। देन आउटफ्लो बाहर निकलेगा तो स्टोरेज कम होता है, आउटफ्लो बाहर निकलेगा तो स्टोरेज कम होता है, आउटफ्लो बंद कर लिया स्टोरेज बढ़ जाएगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा ना, बिकॉज़ इनफ्लो इज कंटीन्यूअस, inflow is continuous, storage go on increasing if you stop the outflow, inflow is continuous, storage is decreasing if you allow the outflow. So completely in reservoir routing, storage is a function of discharge, storage is a function of discharge। समझ आ गया, समझ आ गया, चलो। in reservoir flood routing, in reservoir flood routing, storage is a function of, स्टार मार्क लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, in reservoir flood routing storage is a function of, इसका फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, आउटफ्लो ओनली, आउटफ्लो ओनली। in reservoir flood routing storage is a function of outflow only, S is a function of Q, S is a function of Q, since inflow is coming from upstream, inflow exists from upstream, outflow depends on release, release or closure of valve, release or closure of valve, valve open, valve open, outflow exists, S decreases, valve close, outflow stops, S increases। समझ आ रहे बाबू, फील गारू चपंडी। डन हो गया, हो गया। फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, अरे आपका कमेंट हम नलिफाई कर ले, हमको इंस्ट्रक्शन आ गया अनअकैडमी से, सब्सक्रिप्शन शेयरिंग वाला को डिस्कस मत करो, इनको डाउट्स क्लियर मत करो, आपका कमेंट तो नलिफाई हो गया, सरोगाल पायरेटेड वाला को डाउट्स क्लियर मत करो बोल रहे। फ्रॉम द ग्राफ क्या बोल रहे, ग्राफ से, ग्राफ से क्या बोल रहे, फ्रॉम द ग्राफ,
सेम लाइक ना, सेम लाइक ना, घर में पानी होता है ये तो हो जाएगा, सेम निपुण गारू ऐसा भी होता है। हाँ, दैट इज व्हाई पीपल आर टेकिंग केपी सर एज ए इजी गाय। हमको पता भी नहीं, हम बहुत बच्चे लोग को हेल्प कर रहे हैं, ये अनअकैडमी सब्सक्राइबर वाला भी नहीं, और ये दूसरा इंडिकेटर से सब्सक्राइब करेगा, केपी सर से हेल्प मांगे, क्या करेगा बोलो? मेल आ गया था अनअकैडमी शेयर योर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन शेयर करने के बाद आपको बंद हो जाएगा बेटा, आपको बंद हो जाएगा, ऐसा मत करो। दे आर ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम बोट, दे कैन स्टॉप बोथ योर सब्सक्रिप्शन एंड योर फ्रेंड सब्सक्रिप्शन। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कल भी पता चला एक स्टूडेंट इतना अच्छे से गाइड किया, ये फ्री क्लास स्टूडेंट है, इनको आईआईटी बॉम्बे सीटीएम मिल गया जस्ट बाय अटेंडिंग आवर स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस। सुनो, एक स्टूडेंट है ओनली बाय अटेंडिंग अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एंड वाईटी क्लासेस एंड बाय टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम केपी सर ही गॉट आईआईटी बॉम्बे सीटीएम। कल भी पता चला हमको। सो आपका एफर्ट्स, ये बोल रहे हैं, सुनो, आपका एफर्ट्स अच्छा होगा तो इवन नॉन सब्सक्राइबर आल्सो गेटिंग इट। सिर्फ हम सीरियस होना चाहिए हमारे गोल में, सिर्फ हम सीरियस होना चाहिए हमारे गोल में। आपका पास तो सब्सक्रिप्शन है, हाँ आपका पास तो सब्सक्रिप्शन है, इतना सीरियस और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए, फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई में। यस, दैट टू सीटीएम, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। वेरी गुड सुधा गारू, नाइस। सो हमको तो पता नहीं क्या सौरभ स्लोप गारू, आपका डाउट बेवकूफ डाउट है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट आंसरिंग, डोंट वरी, ठीक है, ये अननेसेसरी डाउट है, बेवकूफ डाउट, छोड़ दो इनको। फ्रॉम द ग्राफ व्हाट वी कैन से, स्टोरेज एग्जिस्ट बिटवीन ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया होने इनफ्लो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का दोनों का, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ्स, स्टोरेज एग्जिस्ट बिटवीन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है डिफरेंस बिटवीन पीक डिस्चार्जेस ऑफ inflow and outflow, what we call inflow and outflow hydrograph peak discharge differences is called as attenuation. Third one, हाँ very good, Gaurav garu, time difference between occurrence of inflow peak and outflow peak, he is called as lag time. अंडर सौरभ स्लोप गारू, ऐसा मत बोलो हर एक स्टूडेंट को हेल्प करता है, ऐसा हेल्प करके वैल्यू नहीं होगा। कुछ लोग तो सब्सक्राइबर स्टूडेंट को भी हेल्प नहीं करेगा, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्लास अटेंड करेगा, स्टूडेंट को भी डाउट नहीं क्लियर कर पाएगा, ये तो बहुत वीआईपी हो गया। हम तो हर एक स्टूडेंट को अवेलेबल है, हम तो वीआईपी नहीं, केपी साहब तो आसान है, कभी भी मिल जाएगा केपी साहब से, ऐसा बोल रहे बच्चे लोग आजकल, ऐसा भी बोल रहे हैं बच्चे लोग आजकल। रिमाइंडिंग वाला तो आंसर भी नहीं दिएगा, वीआईपी हो गया बिना आंसर देने के बाद। अरे आप क्यों हैदराबाद हो गया सुधांकुल? चलो कंप्लीटेड। कभी कभी ऐसा सोच रहे, अच्छा गारू, हम कभी कभी ऐसा सोच रहे मिसयूटिलाइजिंग, बट हम ऐसा सोच के इफ आई एम नॉट हेल्पिंग जेन्युइन स्टूडेंट को हेल्प नहीं मिलेगा, इफ इवन वन जेन्युइन स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग हेल्प, आई फील वेरी बैड। छोड़ दो, कुछ लोग होता है मिसयूटिलाइज करने वाला, एक दो लोग छोड़ दो, रिमाइंडिंग वाला तो अच्छा लोग होता है ना हमारे पास, ऐसा सोच रहे कभी कभी। चलो कंप्लीटेड राइटिंग, फिनिश नाउ। सो ये बोल दिया अभी हम मॉडिफाइड पल्स मेथड, गुडरिच इक्वेशन, मॉडिफाइड पल्स मेथड। अब सीट बेल्ट पहन लो बेटा, एक बार सीट बेल्ट पहन लो, ये इक्वेशन देखने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा बाबू, इतना लंबा इक्वेशन आएगा मॉडिफाइड पल्स मेथड। कीबोर्ड में एच वर्ड ज्यादा यूज किया क्या? ओमी जैसा, क्या रे अभिषेक, ओमी जैसा कीबोर्ड में एच वर्ड ज्यादा यूज किया। मॉडिफाइड पल्स मेथड, इट कैन टेक बेसिक इक्वेशन I minus q is equal to ds by dt. It is going to take basic equation I minus q is equal to ds by dt. So now we are writing I is equal to I1 plus I2 by 2. two inflow values ले लिया, एक टाइम इनिशियल एक टाइम फाइनल होता है, इनिशियल इनफ्लो प्लस फाइनल इनफ्लो बाय 2 एवरेज इनफ्लो ले रहा है, माइनस। अरे बाबू अच्छा करो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईएससी मेंस के लिए। Q1 plus Q2 by 2, अगेन Q1 plus Q2 by 2 क्या होता है? इनिशियल आउटफ्लो फाइनल आउटफ्लो, इनिशियल इनफ्लो प्लस फाइनल इनफ्लो बाय 2 एवरेज इनफ्लो, माइनस Q1 plus Q2 by 2 इनिशियल आउटफ्लो प्लस फाइनल आउटफ्लो बाय 2 एवरेज आउटफ्लो। इनको ये लिखा है S2 minus S1 by 2 by T, S2 minus S1 by dt लिखो, T2 minus T1 मत लिखो, सिर्फ dt लिखो, बस dt लिखो। So now we are taking dt to that side, d2 LHS में ले लिया, dt LHS में ले लिया, क्या होता है? I1 plus I2 by 2 into dt, I1 plus I2 by 2 into dt, Q1 plus Q2 by 2 into dt। क्या रे सुधांकुल, सीट बेल्ट पहन लिया? नहीं होगा, चल जाएगा इतना ज्यादा इक्वेशन आने के बाद। S2 minus S1, I1 plus I2 by 2 into dt minus Q1 plus Q2 by 2
into dt is equal to s2 minus s1. इधर unknowns क्या होता है, known values क्या होता है. Bring all known values to one side, all unknown values to other side. These are all known values only. S1 is also known value, हमको ये पता है S1 क्या होता है, ये तो पता है हमको. What is S1 ये तो पता होता है. So हमको फाइनल डिस्चार्ज निकलना पड़ेगा. फाइनली व्हाट इज इंपैक्टिंग द डाउनस्ट्रीम. फाइनल डिस्चार्ज कौन इंपैक्ट करेगा डाउनस्ट्रीम डैमेज करने के लिए. डाउनस्ट्रीम डैमेज करने के लिए कौन डिस्चार्ज इंपैक्ट करेगा, Q2. And also that will be effect of storage. They both related na, Q2 S2 both related na. Q2 and F2 S2 both related na. Yes, obviously I1 I2 at different inflow times. Different inflow times only, no doubt. So Q2 is the impacting outflow which causes damage to downstream, and that impacting discharge at downstream Q2 will affect storage at reservoir. Storage at reservoir. So now we are writing all known set one side and unknown set other side. Known values at one side, unknown values at other side. Known values at one side, unknown values at other side. ये तो पहले कॉमन I1 plus I2 by 2 into dt. ये तो होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं. That is coming, no worries regarding it. Plus इसको प्लस बोल के कौन आ रहा है, S1 is coming over here. S1 will come over there na. S1 will come over there na. Minus Q1 by dt. Q1 by 2 into dt. We can write like this na? From here. Minus Q1 by 2 into dt. Minus Q1 by t into dt. 2 into dt. That is equal to S2 high or S2 plus Q2 by 2 into dt. Q2 प्लस होता है ना, माइनस से वहां चलेगा RHS में. RHS में प्लस होता है ना बेटा. Q2 by 2, not just Q2, Q2 by 2 multiplied with dt. Multiplied with dt. This is the final modified pulse pattern. Final modified pulse equation. अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ गया, गेट में तो नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं. ओके, दिस इज फाइनल मॉडिफाइड पल्स इक्वेशन. I1 plus I2 into dt plus S1 minus Q1 by 2 into dt is equal to S2 plus Q2 into dt. Q2 by 2 into dt. क्लियर? चलो चलो हो गया. dt तो होता है, dt is change in time. लक्ष्मी गारू, change in time. That is only scientific procedure ना बेटा. From one equation to unknowns तो निकलना पड़ेगा. स्टोरेज तो पता होता है, ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा हमको. We can get the total value. We can get the total value S2 plus Q2 by 2 into dt. पूरा वैल्यू निकल जाएगा हमको. नॉन से अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू क्या होता है, S2 plus Q2 into dt होता है ना. ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा हमको. समझ आ रहा है? Means we find out relation between discharge and storage. Final discharge and final storage का रिलेशन निकल रहा है वहां से. वो मिलेगा ना ये बेटा, ये वैल्यू पता होगा. You know dt, Q2 S2 रिलेशन तो मिलेगा ना फाइनली. फाइनली Q2 S2 रिलेशन तो मिलेगा ना. बोलो बाबू, हो गया. सेम अप्लाई करके गुडरिच गाड़ो आ रहा है. अभी कौन आ रहा है, गुडरिच इक्वेशन. गुडरिच बोल रहे हैं, गुडरिच. So same we are having I1 plus I2 by 2 minus Q1 plus Q2 by 2 is equal to S2 minus S1 by dt. So from here 2 निकल के डिनोमिनेटर में वहां ले सकता है ना. You can write I1 plus I2 minus Q1 plus Q2 is equal to 2S2 minus 2S1 by dt. Is that okay for you? Is that okay for you? I1 plus I2 minus Q1 plus Q2 is equal to 2S2 minus 2S1 by dt. देखो अच्छा गारू, if you are a good mathematician, टू एस टू माइनस टू एस वन बाई डी टी. देखो अच्छा गारू, इफ यू आर ए गुड मैथमेटिशियन, सेम इक्वेशन लेके मॉडिफाई करके एक अच्छा जर्नल पब्लिश करेंगे. सो ही जस्ट डिड मैथमेटिक्स ओनली हियर. और नया इक्वेशन लेके आ गया, देखो नया इक्वेशन लेके आ गया. देखो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस कर रहे हैं अभी. प्लस प्लस क्या होता है, 2S1 by dt. 2S1 by dt ये आएगा ना इधर. 2S1 by dt ऐसा ऐसा आ रहा है ना. हाँ, that is only doing, they are doing that one only. हमारा हेड में डाल दिया बटन. हमको एग्जाम में दिएगा, हमारा हेड में डाल दिया ESC मेंस के लिए. बट दोनों में सेम है, सेम इक्वेशन चल रहा है. सो देखो एक बार, 2S1 by dt इधर आएगा प्लस 2S1 by dt प्लस 2S1 by dt.
माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2s2 बाई डी टी, दिस इज थोड़ा सिंपल ना, प्लस Q2। हो गया काम, गुडरिच इक्वेशन खत्म, गुडरिच इक्वेशन खत्म। और भी आसान करेगा, I1 प्लस I2 माइनस Q1 प्लस 2s1 बाई डी टी इज इक्वल टू 2s2 बाई डी टी प्लस Q2। ये तो थोड़ा आसान है, बट सेम इक्वेशन, सेम इनिशियल वाला सेम होता है, वैल्यूज भी सेम होता है, सेम आंसर भी मिलेगा दोनों में से, दोनों में से सेम आंसर भी मिलेगा, सिर्फ ऐसा चेंज करके रीअरेंज करके आंसर दे रहे हैं, रीअरेंज करके नया इक्वेशन बना लिया। साइंटिस्ट का ब्रेन ये होता है, मैथ का गेम, मैथ का गेम होता है बस। यस करेक्ट संयम गारू, वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट बस। नो टिल नाउ नॉट ओनली गेट, कोई एग्जाम में नहीं आ गया, एक बार ईएससी मेंस में दिया बस, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम मेंस में दिया एक बार, अभी तक कोई एग्जाम में प्रीलिम्स या गेट या एसएससी स्टेट एग्जाम में कभी भी नहीं दिया। सिलेबस, अरे ये बबलू गारू, इनको तो अप्रिसिएशन मिलेगा, इनको जर्नल पब्लिश हो जाएगा, इनका सैलरी बढ़ जाएगा, हमको सिलेबस इंक्रीज हो जाए। इनको पता है हमारा स्टेट वाला हमारा सेंट्रल वाला ये सिलेबस में डाल देंगे, इनको पता नहीं ना, इनको तो जर्नल आ गया, एक नया जर्नल में नाम आ गया। चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलॉजिक channel flood routing, हाइड्रोलॉजिक चैनल फ्लड रूटिंग। हाइड्रोलॉजिक चैनल फ्लड रूटिंग में होता है क्या, होता है हाइड्रोलॉजिक चैनल फ्लड रूटिंग में, कोई रिजर्वायर स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा ना, रहेगा रिजर्वायर और स्टोरेज कैपेसिटी। द मेथड ऑफ hydrologic flood routing, the method of hydrologic flood routing, where there is no storage capacity, there is no storage capacity, like a reservoir or a lake, in between upstream and downstream channels, upstream and downstream channels is called as hydrologic channel flood routing, hydrologic channel flood routing. Then here what is storage? So we consider storage in the channel, storage in the river, don't say zero, don't say zero ना बेटा, हमारा पास एक चैनल है, देखो this is our channel, okay, this is our channel, इनका अंदर पानी चल रहे, सो यूनिफॉर्मली चल रहे, बहुत कुछ होता है, यूनिफॉर्मली चल रहे पानी। सो दिस इज इनफ्लो डाउन अपस्ट्रीम, दिस इज आउटफ्लो डाउनस्ट्रीम, बहुत कुछ है। नाउ डिस्चार्ज स्टोरेज इज जीरो बिकॉज इनफ्लो डिस्चार्ज इज इक्वल टू आउटफ्लो डिस्चार्ज, इनफ्लो डिस्चार्ज इज इक्वल टू आउटफ्लो डिस्चार्ज, बट इनफ्लो डिस्चार्ज से थोड़ा ऊपर चले गए, आउटफ्लो बढ़ गया, स्टोरेज कम होता है। नाउ स्टोरेज इज रिड्यूसिंग, और एल्स इनफ्लो बढ़ गया, आउटफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो कम हो गया, स्टोरेज इंक्रीजिंग डिपेंड्स ऑन हाइट। नाउ दिस इज द डेप्थ एट इनफ्लो, दिस इज द डेप्थ एट आउटफ्लो, सो डिस्चार्ज कम हो गया ना इनकी वजह से, आउटफ्लो डिस्चार्ज कम हो गया, स्टोरेज बढ़ जाएगा। और दिस इज डिस्चार्ज एट डेप्थ एट इनफ्लो, दिस इज द डेप्थ एट आउटफ्लो, स्टोरेज कम होता है, स्टोरेज कम होता है, ये तो ज्यादा दे रहा है, आउटफ्लो में ज्यादा दे रहे हैं, विद इंक्रीज ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो गया, फ्लो एक्यूमुलेट हो गया, बारिश उधर भी हो जाएगा, सम एक्सेस फ्लो कमिंग फ्रॉम हियर, नॉट ओनली वन सोर्स, ड्यूरिंग द जर्नी तो एक्सेस फ्लो आ गया, क्या होता है, हाँ स्टोरेज फॉर नॉट फॉर द टैंक और रिजर्वायर, वी आर टॉकिंग स्टोरेज फॉर द चैनल नाउ, channel storage we are talking, Satish, see this one, see this picture, you can get more clarity for you, this picture,
So here what is traveling between inflow to outflow? Inflow to outflow is traveling now. So constant storage rahega na. What is the storage in the channel? Please understand what is the storage in the channel now. Please tell me. This much storage in the channel ho gaya na. There is no outlet. This much storage in the channel happening na. Constant rahega na storage in the channel now. Inflow is equal to outflow. Storage is constant. Inflow is equal to outflow. Storage is constant. देखो inflow ज्यादा है. More inflow coming. Less outflow. Gradually decreasing this. Outflow is gradually decreasing. हाँ. So क्या हो गया स्टोरेज का बारे में बोलो. स्टोरेज तो ऐड हो गया ना. स्टोरेज तो ऐड हो गया इधर. एक्स्ट्रा स्टोरेज ऐड हो गया स्टोरेज को. स्टोरेज जीरो नहीं है ना बेटा. स्टोरेज जीरो नहीं. एक्स्ट्रा स्टोरेज ऐड हो गया. सो बेसिकली इधर होना चाहिए ना स्टोरेज. बेसिकली इधर होना चाहिए ना स्टोरेज. बट क्या हो गया अभी. अभी आउटफ्लो बढ़ गया. आउटफ्लो बढ़ने के कारण से दिस इज अ डिक्लाइन हो गया ना. डिक्लाइन. डिक्लाइन ऑफ स्टोरेज. समझ आ रहा है पिक्चर में अभी समझ आ गया आपको. फिलगारू. हाँ नाउ यू ड्रा द पिक्चर. नाउ यू ड्रा द पिक्चर. अब तो ये पिक्चर ड्रा करो बस. ओनली दिस पिक्चर यू कैन राइट द 3 पिक्चर्स. ओनली दिस वन यू राइट. ड्रा द पिक्चर्स. मैं अभी आएगा खत्म कर देगा. सो जब आउटलेट के पास पानी जमा हो जाएगा थर्ड कंडीशन कब होगा. हाउ विल आउटफ्लो इंक्रीज विदाउट. आई विल एक्सप्लेन. पहले डायग्राम खत्म हो गया बोलो. डायग्राम खत्म हो गया बोलो. एवरीवन कंप्लीटेड ना. सो दिस इज द चैनल. ओके दिस इज द चैनल. इनका अंदर स्टोरेज रहता है. फॉर एग्जांपल आपको समझ होने के लिए बोल रहा है. ओके 100 मीटर क्यूब वाटर. नाउ यहां से बिकॉज ऑफ फ्लड का कारण से यहां से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है. बाहर भी 20 मीटर क्यूब पर सेकंड चल रहा है. ओके 20 मत ले लो 2 ले लो. 2 मीटर क्यूब पर सेकंड ले लो. सो देयर इज नो चेंज इन डिस्चार्ज. देयर इज नो चेंज इन डिस्चार्ज. इज देयर एनी चेंज इन डिस्चार्ज नाउ. इनफ्लो आ रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड. आउटफ्लो भी चल रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड. देयर इज नो चेंज इन डिस्चार्ज. ओके और फ्लड का कारण से 6 मीटर क्यूब पर सेकंड चल रहा है. आ गया अंदर. 6 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया अंदर. 2 मीटर क्यूब पर सेकंड चल रहा है. कांस्टेंट आउटलेट में. आउटलेट इज प्रोवाइडेड बाय ए कैनाल whose capacity which is provided by us outlet diameter that will be constant 2 मीटर क्यूब पर सेकंड चल रहा है. then what happened धीरे धीरे हर एक सेकंड 4 मीटर क्यूब पर सेकंड बढ़ रहा है. हर एक सेकंड 4 मीटर क्यूब पर सेकंड 4 मीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है. 1 घंटा के बाद 10 सेकंड के बाद क्या होता है. आफ्टर 10 सेकंड फॉर एग्जांपल बोल रहा है. आफ्टर 10 सेकंड व्हाट हैपेंड इट इज 140 मीटर क्यूब होता है ना. एक्स्ट्रा 4 मीटर क्यूब फॉर 10 सेकंड. 1 मीटर क्यूब पर सेकंड एक्स्ट्रा 10 सेकंड के लिए 10 into 4 for 10 सेकंड. 40 मीटर क्यूब हो गया. बढ़ गया ना. स्टोरेज बढ़ गया नहीं. सो दिस इज दैट 40 मीटर क्यूब पर सेकंड. दिस इज दैट 40 मीटर क्यूब पर सेकंड. समझ आ गया अभी. और नाउ फ्लड इज गिविंग ओनली 1 मीटर क्यूब पर सेकंड. फ्लड इज गिविंग ओनली 1 मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके बट आउटफ्लो चल रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड. आउटफ्लो तो ले रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड. देन ये क्या होता है अभी. दिस इज डिक्रीजिंग. आउटफ्लो में इंक्रीज हो जाएगा. ये कम हो जाएगा. देखो एक बार ये कम हो जाएगा ना बेटा. सुनो डिक्लाइन होता है या नहीं. स्टोरेज तो कम होता है 1 मिनट. स्टोरेज तो कम होता है. स्टोरेज कहां रहेगा अभी स्टोरेज तो कम होता है ऐसा. फॉर एग्जांपल अगेन आफ्टर 10 सेकंड 10 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा एग्जिट आउट. सो स्टोरेज विल बिकम 90 मीटर क्यूब और नॉट. स्टोरेज क्या होता है 10 तो एक्स्ट्रा ले लिया. स्टोरेज क्या होता है अभी बोलो बेटा. स्टोरेज क्या होता है. स्टोरेज कम हो जाएगा 90. सो दैट इज सेड टू बी द थर्ड केस. क्लियर हो गया. थर्ड केस में ऐसा चलेगा. एक बार देखो पिक्चर और आपको समझ आएगा अच्छे से. आउटफ्लो कभी भी कांस्टेंट कर दिया. एनी टाइम आउटफ्लो इज कांस्टेंट हियर. एनी टाइम आउटफ्लो हाइट इज कांस्टेंट. आउटफ्लो height is always constant but inflow changing, storage changing. Now storage is a function of very important both inflow and outflow. Storage is a function of both inflow and outflow. So उधर क्या हो गया पहले वाला में storage is a function of only outflow ना. पहले वाला में क्या हो गया storage is a function of only outflow. अब तो क्या मिल गया
inflow and outflow, inflow and outflow. Now that storage S is equal to K into xi to the power m, xi to the power m plus 1 minus x into q to the power m, 1 minus x into q to the power m. Storage S is equal to K into xi to the power m, 1 minus x into q to the power m. तो इधर m क्या होता है? m is a coefficient 0.6 for artificial structures, artificial channel. M is equal to 1. Natural channels, streams and river. Natural channel, river, streams. इनको होता है m is equal to 1. m 1 हो गया, अभी क्या लिख सकता है? इजी फार्मूला हो जाएगा ना, m 1 होगा तो s is equal to k into, अरे रुको सर्व स्लोप का रुको, xi plus 1 minus x into q. सिंपल हो गया ना अभी, k into xi plus 1 minus x into q. सिंपल हो गया. राइट डाउन बाबू. हो गया, डन, కంప్లీటెడ్. ఇన్ఫ్లో తక్కువ ఉంటే అవుట్ఫ్లో కూడా తక్కువ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడికి థర్డ్ కేసులో అవుట్ఫ్లో ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే నీకు అర్థం కావట్లేదు సతీష్. ఒక ట్యాంక్ తీసుకున్నావు, ట్యాంక్కి ఒక పైప్ పెట్టావు అవుట్ఫ్లో. ఆ పైప్ లోంచి బయటికి వెళ్ళే వాటర్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది కదా. ఇది సేమ్ కండిషన్ హియర్. This is a channel and we are allowing flow from a particular diameter through the channel Q, and this opening of the channel where it is delivering there, delivering at the downstream. Channel तो ऐसा होता है, but the delivering valve, delivering opening is there ना, delivery opening, that should be fixed रहेगा. So the discharge, outflow discharge will be there, it should be considered to be constant there. Yes, it depends on outlet mouth. So S is equal to K into xi plus 1 minus x into q. ये K x क्या होता है? I तो पता है हमको, I is inflow, Q is outflow. I and Q are known, then what is K and x? K is storage time coefficient. K is storage time coefficient. X is weightage factor. X is weightage factor. And this value varies from 0 to 0.5. 0 to 0.5. The value varies from 0 to 0.5. वो आएगा बाद में, आएगा मस्किंगम. लकी गारू, this is only storage. Muskingum will give you outflow discharge values. They are talking about only storage here. Muskingum talking about Q1, Q2, Q3, Q4 values, outflow ordinate. हमारा पास inflow hydrograph is there, हम outflow hydrograph coordinates निकलना पड़ेगा, इनका बारे में मस्किंगम दिएगा. समझ आ गया लकी? When you consider x is equal to 0, when take weightage factor is 0, no weightage factor, both are inflow and outflow have same weightage. Inflow and outflow are equally important. देखो एक बार, ये x होगा, सुनो एक बार, ये x होगा, we have said 0.2, then it should be 0.8 होता है. ये x होगा 0.3, ये होता है 0.7. If it is 0.5, then both are 0.5, equal होता है ना. Inflow and outflow values both are equally weighted, equally important for us. If x is 0, xi 0 होता है, हाँ, I का importance खत्म. Inflow is not important, only outflow important. Then what happened? That is called linear reservoir, linear channel. X is 0. Storage is equal to K into 0 into I plus 1 minus 0 into Q. क्या होता है अभी? S is equal to KQ. This is called linear reservoir, linear channel. Linear reservoir or linear channel, what we can say? Storage depends on Q only, outflow only. समझ आ गया दोनों का इंटरलेशन, प्रीवियस वाला का प्रेजेंट वाला का. फ्लड रूटिंग थ्रू रिजर्वायर एंड चैनल, that completely depending on weightage of inflow and outflow. चलो कंप्लीट राइटिंग. अरे क्यों बार-बार थैंक यू बोल रहे हैं? ऐसा लेके क्लासेस इंक्रीज हो गया बेटा. इफ यू टेक 1.5 hour, number of classes increasing, people are saying hydrology बहुत दिन चले गए. Yes, this is a linear channel only. Obviously linear channel only, संयम गारू. But lectures तो बढ़ गया, time will be same ना बेटा. That is only problem. अनवर गारू, lectures तो increase हो गया, but time is 1.5 hour लेके same time हो गया, number of days only increase हो रहा है. बच्चे लोग परेशान नहीं चल रहे. चलो प्रिज्म स्टोरेज, वेज स्टोरेज. हमारे पास दो स्टोरेज होता है बेटा इधर. प्रिज्म स्टोरेज एंड वेज स्टोरेज, two types of storages we are having. तो जनरली क्लास तो 30 में खत्म होना चाहिए ना, 30 into 2 60 hours. अभिषेक
अभी तो क्या हो गया 40 into 1.5 60 आवर्स हो गया, 40 into 1.5 60 आवर्स हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। समझ आ गया? So when you take a channel, this is a channel, this is a channel, flow is traveling parallel to it, flow is traveling parallel to it. So this is always an imaginary line only, no? If you consider the flow is traveling parallel to the channel, will flow always smoothly travel like this, parallel to the channel, will flow always smoothly travel like this. If flow always smoothly travel like this, the storage is called prism storage, the storage is called prism storage. But flow ऐसा नहीं चलेगा, flow ऐसा कभी कभी ऐसा आएगा, ऐसा चलेगा, देखो घूमता रहता है ना फ्लो, फ्लो ऐसा घूमता रहता है, देखो एक बार फ्लक्चुएट हो जाएगा फ्लो, चैनल फ्लो कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म फ्लो से नहीं चलेगा, ऐसा फ्लक्चुएट होके चलेगा, ऐसा देखो। यस, दैट इज ओनली आवर फ्लड वेव, गुड। सो दिस इज आवर फ्लड वेव, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारा फ्लड वेव ऐसा चल रहा है, दिस इज आवर फ्लड वेव, फ्लड वेव। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? पैरेलल टू द चैनल बेड, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द चैनल बेड, यूनिफॉर्म फ्लो इमेजिनरी लाइन, यूनिफॉर्म फ्लो प्रिज्म, दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो प्रिज्म। So below that line, whatever storage exists, na, that is prism storage. Below that line, whatever storage exists, na, that is prism storage. And this is called wedge. Extra हो गया ना wedge storage. So this is a positive wedge. और ये क्या होता है? इधर देखो, ऐसा आ गया, wedge storage कम हो गया ना, क्या हो गया? prism storage का नीचे चले गए, prism storage का नीचे चले गए, ये क्या होता है? नेगेटिव wedge होता है, नेगेटिव wedge. Understand? पॉजिटिव wedge चैनल पे ऐसा चल रहा है, एग्जैक्टली यूनिफॉर्मली चलेगा। सो ये दोनों का बीच में होने वाला पानी प्रिज्म होता है, इमेजिनरी लाइन का। इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस, ऊपर वाला एक्स्ट्रा फ्लो को पॉजिटिव वेज होता है, नीचे वाला कम हो गया ना डेफिसिट फ्लो, इनको नेगेटिव वेज होता है, कम हो गया ना डेफिसिट फ्लो, इनको नेगेटिव वेज होता है। समझ आ गया? सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट ना, यू नीड दिस पिक्चर, ओके करो। ओवरऑल बात करने के बाद हम वेज नहीं लेंगे, प्रिज्म भी ले लेंगे। नवरोज जी, इफ यू आर टॉकिंग ओवरऑल, हम ओवरऑल बात करने का टाइम पे सिर्फ प्रिज्म भी बात करेंगे, वेज नहीं रहेगा, वेज नहीं रहेगा। कंसीडरिंग फ्लड वेव इज यूनिफॉर्म, फ्लड वेव कंसीडर टू बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। प्लीज राइट डाउन दिस वन, वॉल्यूम दैट वुड एग्जिस्ट, यूनिफॉर्म फ्लो अकर एट डाउनस्ट्रीम डेप्थ। सो प्रिज्म स्टोरेज इज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, प्रिज्म स्टोरेज इज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, वेरी क्लियर। नॉट ओनली इन बीच ऑलवेज वेज स्टोरेज ना संयम गारो। अरे बीच ओशियनिक वेव्स ऐसा आके चलेगा, घूम जाएगा ना बेटा। प्रिज्म स्टोरेज कैसा होता है ओशियन में? बीच में ड्यूरिंग नॉन रेनफॉल पीरियड प्रिज्म स्टोरेज रहता है। फ्लड पीरियड में क्या होता है? कभी भी फ्लड वेव्स कैन ट्रैवल, फ्लड वेव्स कैन डैमेज इरेगुलरली। नो ये सब देखने के लिए कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज हो जाएगा पानी। देखो इनफ्लो यहां से आ रहे हैं, आउटफ्लो यहां तक मिल गया। ये इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस वेज स्टोरेज हो रहा है। देखो इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस हो गया वेज स्टोरेज में। ये लाइन हो ना, लाइन हमारा इमेजिनरी लाइन होता है इनफ्लो लाइन, और आउटफ्लो लाइन इनका नीचे हो जाएगा और इनका ऊपर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होता है वेज स्टोरेज। कंप्लीट राइटिंग द थियरी, थियरी खत्म हो गया बाबू, थियरी खत्म हो गया। देखो हम ये पिक्चर डाल दिया ना, ड्रा किया ना इधर। सो हियर इट इज पॉजिटिव वेज, दिस इज पॉजिटिव वेज, दिस इज नेगेटिव वेज ना, पॉजिटिव वेज नेगेटिव वेज। समझ आ गया? पॉजिटिव वेज नेगेटिव वेज, ऊपर से आ गया, ये नीचे गिर गए, पॉजिटिव वेज नेगेटिव वेज। हाँ ऊपर लाइन प्रिज्म होता है, यूनिफॉर्म लाइन प्रिज्म ना, यूनिफॉर्म लाइन प्रिज्म ऑब्वियसली, ये तो प्रिज्म। इधर 140 आ गया ना, 140 पॉजिटिव, इधर 90 हो गया, कम हो गया नेगेटिव। आपको ये चाहिए राइटिंग, संयम गारू, यू नीड टू राइट दिस। ये भी लिखो ना वेज स्टोरेज के बारे में, द थियरी इंफॉर्मेशन लाइन रिगार्डिंग वेज। Remaining two topics are there. Well hydraulics is a bigger chapter. Stream gauging is a smaller chapter. Tomorrow we'll finish flood routing. No doubt, कल खत्म हो जाएगा flood routing. Well hydraulics is a बड़ा chapter और stream gauging is a छोटा वाला chapter. कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा जल्दी। डायग्राम ना चाहिए, डायग्राम ना चाहिए बेटा। नो एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है ना, ये एक्स्ट्रा वाला वेज होता है मुसबत,
एक्स्ट्रा पोर्शन होता है ना, ये वेज होता है। हो गया, चलो। सो विल कंटिन्यू टुमारो। टुमारो मुस्किंगम बात करेगा, विल टॉक अबाउट टुमारो, विल टॉक अबाउट मस्किंगम इक्वेशन अंड न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अंड न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कल बात करेंगे। हाँ, ये स्टार मार्क वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।